So today's agenda is virtual base class. Okay, what do I mean by multiple paths? Now to go from here to, let's say, any prominent landmark, Pune College. Let's say to go from here to Pune College, what is the path you all will follow? And is that the only path? So you can have multiple paths, correct? So you all know what multiple path meaning, right? So I will try to do an inheritance of this nature. This is which inheritance? Hmm? Is it? This is hierarchical. This is hierarchical. This is which inheritance? Hierarchical. So let's say if this is an inheritance called as account. It's called as what? Account, which will take the customer name, okay, and customer age. What will it take? Customer name and customer age. Those attributes which are there on the Aadhaar card. Address. But I don't want to just keep it short and sweet. So what all attributes will be there in the class account? Name and age. Now this account will be inherited by a class called as saving account. Called as what? And will also be inherited by a class called as. Is this making sense to you all? So saving account will have saving account number, okay, then saving account balance. What will it have? And current will have what? Current account number and current account balance. Yes, no, maybe. So now if I want to make objects of the saving account class, okay, how will we design this? How will we design this? Tell me. How will we design this? Yes, no, maybe. हाँ बताओ कोड कैसे लिखेंगे इसका बोलो कि हाँ लिखो लिखो will we design this? I'll make a class called as, tell me. So first what to include? And then class, and what will I have put in it? Private what? No private, no private. Why no private? Will I make the C name and age as private? Why no private? Because I plan to inherit it in the future, and if I make it private, private is not inherited. So first you make the design of it, right? Then accordingly you make the class. So what do I put it then? If not public, then protected. And int what? What is it? Name and age. So what? Character, cname of 10 and integer age. Making sense? Now I go to public. Then what do I write first? If we are going to store multiple records like an array of customers, then better you follow the accept and display model. Or now if you bring the constructor, then you'll have to involve malloc and new and delete. Dynamic memory will be involved. So stay away from them. So let's keep it what simple. Void accept account. Okay. And what will I tell over here? See out, enter what? Enter name, customer name and age. And where will you take it in?
C name and making sense. And similarly, what will you say? Yes, display account. And what will you display? C name. Okay, and you're gonna put a prefix. Customer name, C name, handle, and C out. Customer age and end. Is this making sense to you all? So what do I do next? Correct? Simple. Accept or display. Then which class do I make next? Class what? Saving. What does it do? In public mode. Which class? Public class. In public mode. Account. Okay. And now what will be in this saving class? I will paste this. Protected what? Tell me. Integer s, saving account number, and the float balance. Float sbal. Yes, no, maybe. And this will be which class? Accept what? And what will you ask? Enter. Saving account number and balance, right? And you will take it in which variable? S number and S bar. And then what will you display? Saving account number and in S number and क्या S bar. कोई शक? कोई शक इसमें? कोई शक? तो इससे वो कॉपी करेंगे और वापस क्या करेंगे? Paste. Faza, are you getting what's happening? Correct. Yes, sir. पब्लिक अकाउंट को क्या करेंगे? जहाँ एस है वहाँ सी कर देंगे, जहाँ एस है वहाँ क्या कर देंगे? सी. और जहाँ सेविंग है क्या कर देंगे? करंट. तो क्या बोलेंगे? जहाँ सेविंग है वहाँ क्या करते हैं? करंट. तो क्या जाएगा? सी नंबर और सी बैल, राइट? सी नंबर और सी बैल. और ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करंट और ये डिस्प्ले करंट. सी नंबर और सी बैल. और क्या बोलेंगे हम लोग? क्या करेंगे? Now, can X, so when I will make an object of current, from that I also want to accept his name and age. So what will I call over here an accept current? So when accept saving, I will call what? Accept, but it is of which class? So what will I say? Account and which function? Accept account. And while displaying, I will also display the account also. What will I say? Yes, no, maybe. And similarly, then I will call over here for current. I will call what?
account, accept account, and while display what will I make? Is that understood? So now I can go and void main and directly make objects of which classes now? Saving S1 is saving S1 and current, and now with S1 I will call S1 dot only accept saving, and with C1 I will call accept current, and with S1 I will call display आ गया saving नहीं है, what nonsense. तो ये है एक्सेप्ट अकाउंट, डिस्प्ले अकाउंट. ये क्या है? एक्सेप्ट सेविंग और डिस्प्ले सेविंग ना. और फिर ये एक्सेप्ट करंट और डिस्प्ले करंट है ना. तो आई विल से डिस्प्ले सेविंग एंड C1 डॉट डिस्प्ले अकाउंट. फंक्शंस है तो ब्रैकेट आ गए, फंक्शन है ना. Yes or no? So now when I call accept save, what will it ask me first? It will go to accept saving. ठीक है. और accept saving it will go and call the account का extra account, and it will go and ask me for enter name and age. So if I enter Alice 21, and then what will it ask me? Save account number. So if I enter 101, balance 1000. And now if I call C1 dot accept current, it will go here. What do accept current call first? Account dot. So it will go up and ask me to enter. So I enter Ben and 23, and then I will come here. It will ask me to enter. I enter 102 and 2000, and now when I display, will display S1's all 4 attributes and S2's C2's all attributes. Yes, no, maybe. Let's copy this and let's try to run it. So let me pause the. मैंने कॉपी कर दिया इधर. अब मैं कोड रन करता हूँ तो कोड का हालत क्या है, रन हो जाता है. ठीक है. कस्टमर नेम कौन है? पहला कस्टमर अपना एलिस, उसका एज है 21, अकाउंट बैलेंस क्या है? 101 और 1000 रुपये, और फिर 2 बैन और 23 102 और 2000. एंटर किया तो कस्टमर इज एलिस 21 101 1000 बैन 23. So this was which inheritance I used over here? Yes, no, maybe, guys. Understood? This is the inheritance what I used over here. Correct? Okay. So if I have to show multiple inheritance, is the red part? Yes, sir. Mother, father, child. मदर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स और फादर के भी एट्रीब्यूट किसमें आ गए? अमान कौन है? अमान अभिषेक कौन है? Okay, unmute करो. Okay, so now if I want to do multiple inheritance, it will be of this nature. Yes. The red वाला. Yes. तो इसके एग्जांपल क्या है? The father child. So how will you do it? Programming example. तो एक बंदा जो है वो उसका जो रिजल्ट निकालेंगे हम, तो वो उसके एकेडमिक्स को भी कंसीडर करेंगे और उसके स्पोर्ट्स को भी कंसीडर करेंगे. ये आपकी भाषा में इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? इंटरनल और एक्सटर्नल. तो आप हम उसको अलग कर देते हैं एकेडमिक और स्पोर्ट्स. इन दोनों और स्पेल स्पोर्ट्स मैन, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा उसका रिजल्ट. ठीक है. अब एकेडमिक में हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेंगे, M1 M2 M3. ठीक है. और स्पोर्ट्स में हम ले लेंगे रन स्कोर और गोल स्कोर.
ठीक है, उसको क्रिकेट भी खेलता है, वो फुटबॉल भी खेलता है, तो जितने रन मारेगा उतने मार्क्स मिलेंगे, जितने गोल मारेगा उतने मार्क्स मिलेंगे, तो उसका एकेडमिक्स वैल्यू बढ़ेगा। सो अभी मेरा सवाल ये है कि हाउ विल बी डिजाइन द क्लास एकेडमिक, बहुत जल्दी बोलो, क्लास एकेडमिक, और क्या रहेगा उसमें, प्राइवेट M1 M2 M3 है ना, हाँ प्राइवेट रहेगा, पब्लिक रहेगा, गाँव को दिखा दो चिल्ला चिल्ला के, हाँ? सबको स्कीम सुना दे, तो प्रोटेक्टेड, तो क्या का इंटीजर M1 M2 और M3, ठीक है। और पब्लिक में क्या रहेगा फिर भाई, वो ही एक्सेप्ट और डिस्प्ले करो, कंस्ट्रक्टर से होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग को मैंने बताया था लास्ट सेशन में पॉइंटर्स बना के, तो जिसको समझ में आ गया होगा वेल एंड गुड। सो पब्लिक तो क्या रहेगा, एक्सेप्ट डिस्प्ले, तो लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वही करते, लेट्स गो टू द ड्राइंग बोर्ड और यही करते, ठीक है। सो यहाँ ही कोड ही करते डायरेक्ट, प्रोटेक्ट एकेडमी में M1 M2 M3 आ गया। अब क्या फंक्शन बनेंगे बोलो भाई, बोलो भाई पब्लिक में क्या, एक्सेप्ट एकेडमिक और पब्लिक एक आ गया, ठीक है। एक्सेप्ट द क्लास का नाम और डिस्प्ले, तो सिंपल सा टेम्पलेट है, ये फॉलो करो बस, कोई प्रॉब्लम। और एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, राइट, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो किस पे जाएंगे बोलो भाई, M1 M2 और M3, कोई शक। फिर डिस्प्ले एकेडमिक में क्या करेंगे अपन, पहले इसको तो बनाओ, क्या करेंगे, ठीक है, तो साइंस के मार्क्स है क्या, M1, करेक्ट। और भी सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट ही आज के ज़माने में पढ़ने लायक, साइंस मैथ्स और यस यस, how does the Canadian, how does the Punjabi woman staying in Canada call her son, वो है वो, ठीक है। एकेडमिक आ गया और ये फंक्शन सिंपल बन गया, ठीक है। हाँ अकाउंट है क्या, ओके, एक्सेप्ट एकेडमिक्स में अकाउंट, नॉट वेरी गुड, आई लाइक इट, ठीक है। दिस वाज वन बेस क्लास, और आता है क्या हो गया, दिस वाज वन बेस क्लास, देन आई मेक वन मोर बेस क्लास, क्लास व्हाट, न्यूजीलैंड RS कॉमा MS, ओके, रन स्कोर मैचेस स्कोर नहीं, गोल स्कोर RSGF, तो फिर क्या, क्लास एक्सेप्ट स्पोर्ट्स एंड डिस्प्ले स्पोर्ट्स, तो क्या बोलेंगे, एंटर रन स्कोर एंड गोल्स स्कोर, ठीक है। तो किसमें जाएगा वो, RS और GS, मेक सेंस टू योर, that makes a lot of sense, right? Then how will we do that next? Mm-hmm. Mm-hmm. नहीं सर, no idea मुझे। Okay, so what are we doing, display sports means enter, okay, so what are we going to do over here, runs scored, yeah, scored this many runs, RS, okay, and what, goals scored will be what, GS, yes or no, correct,
runs code and goals code, right? That's all. Then what do we do next? Now make a class called as result, which will public inherit from academic and will public inherit from sports. So now my result class, I've got all the data. So here I don't have to do anything, so I can make a private variable, correct? Yes. So here I will calculate the total of all the subjects, and then I will calculate the percentage. I'll calculate the percentage. So now let me say void calculate percentage. So how will we calculate now? We will say total equals to M1 plus M2 plus M3 by virtue of inheritance. The result class has got M1, M2, M3, and it has also got. So one run, 1 mark. One run. So if you score a century, you get 100 marks. And one goal, 30 marks. So if you score one goal, you get 32 goals, 60, and 3 goals, 90. Okay, you don't score more than 3 goals. So run plus goals scored into what? 3. Correct? नहीं जरूरत नहीं. Okay, total हो गया. Now what is the percentage? Total divided by 5, right? Now there are 5 subjects, correct? Yes, no, maybe. And now what will we do? Display. Yeah, void display. Sorry. What will we do? Void display. What? Display result. And how is that? Tell me. So what will I just display? Total and percentage, right? Rest all has been displayed earlier. So what is it? Total marks and percentage. Okay, so total marks is total and percentage is percentage. So directly I'll make object of which class? Directly I'll make object of which class? Result class. So let's start. Send the idea. Yeah, the keys. Yeah, the keys. Give the keys to Yahya. ठीक है. So yeah. हाँ, my bad. Sorry. 30. ठीक है. Total percentage and percentage. Okay. Now who's done and done, correct? And then now void main. So whose object will I make? Always object of result class directly. Result R1, and directly I will call R1 dot calculate. What will I call? Calculate percentage. So calculate per will call the accepts of both. So we'll call accept. So it is of which class? Academic, char bindi or accept academic, and we will also call sports and access sports. The functions, correct? So when I call calculate percentage, we'll call this to fetch the data, and then when I'll call display, what will it call? Display of both of these and then calculate the result. Yes or no? The streamlined approach, right? Display academic and display sports. Making sense? And now R1 dot calculate and R1 dot display result, right? Is this understood? Any confusion so far? No confusion, right? Have I copied this code to share it with you all? I haven't, right? So I'll copy it and save it in the notepad. Okay, remind me to share it with you all.
I copy this and I paste it back over here. Yes, no, maybe. So let's try to run this now. Okay. Oh my god, कैसे ले में यार तुम लोग कसम से. आयो stream dot. Okay, so let's check. Marshall, it's not accessible 64 65. मैंने शायद प्राइवेट पब्लिक लिखा नहीं क्या? ये डिफॉल्ट क्या हो गया फिर? व्हाट मैन, फंक्शंस कहाँ थे? तो मैंने वो प्राइवेट तो कंटिन्यू बाय डिफॉल्ट क्या करा उसने, इनको भी क्या ले लिया? प्राइवेट ले लिया, तो बोला एक्सेसिबल नहीं. ओके, नाउ एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो उसको मिले 70 75 और 78. कितने रन मारा उसने? रन मारा उसने 98 और गोल मारा 2. तो उसका साइंस में 70, मैथ्स में 75, कंप्यूटर में 78, रन मारा 98, गोल मारा 2. टोटल मार्क्स हो गए 381 और परसेंटेज हो गया 76. यस, नो, मे बी. वेरी स्ट्रीमलाइंड आउटपुट, वेरी गुड. नाउ आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू हाइब्रिड. इस स्टूडेंट का नाम और उम्र क्या है भाई? गुमनाम है. तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी समझो तुम अभी, ठीक है? इसको ऐसे कर दो, क्या कर दो? What I'm trying to do is, I'm trying to do this, and I will change the account to student. Change the account to student. Yes, no, maybe. I'm getting what I'm trying to do, and I'll take his S name and SH. Yes, and then these two classes will inherit from. तो अभी academic क्लास में क्या था? M1 M2 M3. तो रिजल्ट में यहाँ से क्या आया? M1 M2 M3. और इसमें स्पोर्ट्स में क्या था? तो रिजल्ट में क्या आया? RS और GS. अब स्टूडेंट में क्या है? प्रोटेक्टेड है वो, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? एकेडमिक में S नेम, जो भी C नेम, एज और ये, और यहाँ भी जाएगा. तो क्या हो जाएगा? यस और नो? अब जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ से कितने C नेम और C जाएंगे? यहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे ना, क्योंकि मल्टीपल पाथ है ना. जब कहानी शुरू हुई थी अपने आज की, मल्टीपल पाथ हो गए. तो अभी इन द क्लास कैन वी हैव 2 वेरिएबल विद द सेम नेम? नॉट परमिसिबल. तो अब क्या करना है ना? ड्यूअल पाथ हो गया ना, इसको होता है डायमंड इनहेरिटेंस. क्या होता है इसको? डायमंड इनहेरिटेंस. 2 पाथ हो गए. स्टूडेंट से रिजल्ट में आने के कितने पाथ हो गए? That will lead to ambiguous data, and my code will not run because my result cannot have 2 C names. So now what I do is I make the intermediate classes, which मतलब कौन से? जो बीच वाले हैं. कौन से? इनको क्या बोलते हैं? इनको I make virtual base class. तो मेरे रिजल्ट क्या है ना, ये बेस क्लास नहीं है. क्या है ये? वर्चुअल. एक्चुअल नहीं है. क्या है? वर्चुअल बेस क्लास है. तो वर्चुअल बेस क्लास हमेशा इंटरमीडिएट क्लास बनती है. क्या बनती है? तो ये वर्चुअल बेस क्लास क्या हो जाएगी? तो जहां पर भी डेटा विल बी कॉन्फ्लिक्ट, डेटा विल बी, इट विल बी फेच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. इट विल बी फेच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स से डेटा फेच होगा. जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आकर होगा, जहां भी क्या होगा, तो कहां से फेच किया जाएगा? ओरिजिनल सोर्स से. तो मेरे वर्चुअल बेस क्लास कौन से बनेंगे? बीच वाले. कौन से बनेंगे? बीच वाले क्लास क्या बनेंगे? वर्चुअल बेस क्लास. ओके, सो नाउ आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट दिस. सो आई विल टेक द अकाउंट क्लास, राइट, जो अपनी थी, उसी को रैप कर देंगे ना, अपन कस्टमर बना देंगे. तो मैंने ये उठाया यहाँ से, ठीक है, और उसको यहाँ पटक दिया. मैं काश वो भी उठा लेता था अपने. ठीक है, यहाँ पर अपन ने इसको प्राइवेट का इशू आ रहा था ना, सर्वर से मानेंगे नहीं पब्लिक. Now what am I doing? I am copying the customer class, right, along with the header file, because that was missing in the previous question, right?
So I copy that and paste it over here, and just change this account to what? Student, right? And this to S name and age, right? And I call what? Accept student. And I say what? Student name and age, right? And S name. And I say what? Display student, right? And I say student name is S name and student age is age. So far so good. Now my academic, what will it do? Inherit from which class? Public from student. And what will my sports do? Inherit from, right? So but these are my base classes, virtual base class, right? So whenever they will inherit, they will say virtual public. What they will say? They will not say. So if there is any duplicate data which is passed on, it will be passed on from the original source. If from academic and sports there is duplication in the third class, so these class will say, in that regards we are not the actual class, the actual base class is above us. Okay, so you have the intermediate classes as virtual. So write virtual public or public virtual, whatever you feel like appropriate. Public virtual will also help. Okay, both are okay. And now public virtual, virtual public both are same. Okay, result में public नहीं किया, ये भी कर दे, ठीक है. Now when I want to call my accept sports or display sports, right? Yeah, now we will do some logic. Just hang on for a minute. Hello. Now if we have to call the which one? Accept and display student, right? So when will we call it? So we'll directly call it once over here direct, right? In your class calculate, we're calling accept academic, accept sports, right? So we'll also call which one? Student dot accept, right? And while displaying, what will we call? Student dot display student, and then calculate the marks and because this should be called only once, right? And now the duplication has been eliminated because we made the intermediate class as virtual. Okay, so you can use which keyword over here? Public virtual. I can be used interchangeably by virtual public. Make sense? This should be able to do it. So run this, and I run this code, and let's check it out. Okay, enter marks of 3 subjects. Let's say I enter which you can calculate. Okay, let's say we can calculate now 80, 80, 80. How much? Goal scored 80 and goal scored 2. So how much? 80, 80, 80, 80. That's 320. 320 plus 60 is 380. What is 380 by 5? 38 by 5 is 79. Yes, no, maybe. That's 79, right? Okay, now it's asking for the age. We should have asked this first. We should have asked this first. Alice and 21. Okay. So it's showing 76, 38. Yeah, 38 is 76, right? So showing all the 80, 80, 82, Alice 21, 380, 76. I should have asked for the name and age first up, right? So where should have I done the changes? I should have done the changes over here, correct?
I'll ask this first up. So today we have completed 4 types of inheritance. Today we have completed how many types of inheritance? The black part was hierarchical, the red part was, and the black and red was hybrid. And last time we had done single. And we also finished virtual base class. Am I understood? Yes, no, maybe. Perfect.